Give me a second, students. Good evening, everyone. Good evening, JNV Bagalkot students, JNV Ballari students, and Tirth, and students who are in live class. Good evening. Okay. Give me a second. Be over here. Probably I need to share everything again. Just wait for a second. Okay. Yeah. Hello. 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 Good evening. Good evening, everyone. Parth. Good evening. Abhay. Good evening. Uh, Students from Bagalkot. Good evening. I hope everyone is good. Yeah. Yeah, Melita, good evening. Okay, before going ahead, so anyways, the times is up. Time is up. So let us quickly go to the polls of like say technical poll. Okay. Yes, sir. We are fine. What? Okay, I'm fine. I'm fine too. Okay, I'm fine too. How are you all? Nice. Okay, students. So before going ahead, let me take the quick technical check. Let me know through the poll. Let's say I'm launching the poll. Is my audio, is my PPT, is my presentation is visible or not? Okay. And students in YouTube live, please let me know is everything is clear or not. Okay. Milita. Okay. Kriday, let me know. Okay. Good, good. Thank you for your answer. Yes. Give me 1 minute of time. So yes. Okay. Thank you. Everyone has answered it. I'm ending the poll. I think everything is visible. And yeah, during the class, let me know is there any issue in my audio and video through the chat. Okay. So, okay. Okay. Thank you, everyone from YouTube too. Nice. So, students, do you remember what we were studying? I hope you had a nice weekend, but I hope you still remember what we were studying in the last class. Okay. So, yeah, nice. Path. Okay, nice. Teeth. Sweetie, welcome to today's class. Padari students, welcome to today's class. Okay. Nice. Now, so we were talking about what? We were talking about Newton's laws of motion. Yes, in that you have already studied about the first law. Okay, already studied about first law. Then what did we talk about? We talked about a lot of things, right? Tensions, free body diagrams, those things and all. Yes. So before moving ahead, let me quickly go to today's what we are going to talk about today, the content of today's session. Okay. So first thing is obviously the quick recall to make sure that since you have had a long, like say 2 days of holidays, let us quickly go through what you have studied. And in the last class, I talked about rotation of axis concept. Yes, we did talk about it, but I'm going to do it again today. Then we'll solve a small numerical based on it. Okay. Since you have already studied about rotation of axis in the last class, so today you need to solve the what the let's say the numerical based on it. Okay. Then we'll talk about concept of momentum. You know what is momentum? Everyone has gone through or at least seen once in their lifetime. P is equal to m into v. Yes or no? इसको देखा है ना सब लोगों ने? ओके, सब लोगों ने देखा है ना पी इज इक्वल टू एम इनटू वी? कभी तो देखा होगा, वेयर एम इज मास, वी इज द वेलोसिटी, ये सब देखा है. ठीक है, लेकिन आज हम उसके फील लेंगे. ठीक है, देन विल टॉक अबाउट like say there are certain important points of momentum, like say what is momentum, let's say what is the SI unit and those things and all. Okay, then we'll touch upon what Newton's second law of motion. Then later we'll talk about the summary. That's all for today. Okay, students, so coming into what we have studied in the last class. So can anyone tell me what we have studied in the last class? You hope you remember it. Let's say I'll tell you what we have studied, but do you remember what we studied in the last class? Abhay, free body diagram, yes. Parth, Sweetie, sums, yes, very good. Equilibrium, questions and pulley, okay, very good. Yes, that is what we did. Numericals, right? Numericals based on what? Numericals based on FBD. Yes or no? In that we did 2-3 problems based on it.
Then we talked about what? Rotation of axis. Yes or no? Yes. Okay. Good evening, Spurti. Welcome to class. So yeah. So we were talking about what? Rotation of axis. Now, what is this rotation of axis? Do you remember? Do you remember what is this rotation of axis? Students, let me know. Let me know, students. Do you remember what we have studied in rotation of axis? Okay, students, just give me 1 second. Give me a second. There is some technical error. So for that reason, I'm just clearing it. In the meantime, please try to recall what we have studied in the rotational axis. Okay. Good. No problem. Let us move ahead with today's session. Okay. So what was this rotation of axis? See, as I said, let's say we have a mass over here. Okay. We have a mass over here, and this mass, okay, is what? Inclined in a plane. This is the plane. This is the inclined plane. I hope you remember this also. It's in what? It is kept in an inclined plane, as you remember. Now, when you talk about what? The forces acting on it. See, you know that there is this what? Weight that is acting, which is acting vertically downwards. That is weight is equal to m into g. Yes or no? Now, if I'm standing over here, you know there is a tension acting away from the point. And also, if I'm standing over here, there is what? A point of consider, there is a tension over here also. Yes or no? There are certain tensions. Now, as I say, students, since this body, let's say this mass m is in contact, okay, just a second, is in contact with what? With the cube, or let's say inclined plane, not cube, inclined plane, there will be a normal that is acting due to this surface, normal that is acting on the surface. Now, when you talk about, see, based on those things, let's say you have axis. Now, you remember, you do, you try to solve the FBD based on the axis, yes or no? Now, if I take this as your axis, yes, very good. Now, this as your x-axis, just a second. This as your x-axis, this as your y-axis. Now, based on this inclination of this plane, how the diagram comes. Now, over here, your tension comes over here, yes or no? This is your tension. Now, here there is this normal, yes or no? Yes or no, students? Let me know. And where does this weight comes? The weight will come over here. I remembered now. Very good. Very nice. Okay. Okay. Just a second. This will be your weight. Yes or no? The weight will be acting over here. Now, students, the problem with this is, see, when you're taking this as your axis, basically, over here, just remember this. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay. When you take this axis, the problem that it's not the problem. It's just that when you're trying to solve the numericals, it's much more complicated because over here it is inclined at some theta 1 and this is inclined at some theta 2. Yes or no? Now you need to take both the components. Yes or no? T cos theta 1. Then over here, this is n cos theta 2. And also there is another component that is what? T sine theta 1 and what? N sine theta 2 over here. Now you have to take all these components and try to solve the numerical. Yes or no? Try to solve the numericals based on the components. But the problem is if you're trying to do all the things, you might do certain mistakes. Okay, do mistakes. See, हरी भरी में तो अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा हरी में तो मिस्टेक हो ही जाएगा ना. तो अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, इಷ್ಟು कॉम्प्लिकेटेड ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. For that reason, what you do, students, see, you had your axis. First of all, let's say I'll go to the next page. You had your axis. What is this axis? Yes or no? You had your axis as x-axis and x negative axis, y negative and y positive axis. Now what you do is you rotate your axis. Here
rotate your axis by some angle theta, by theta. Okay, if you rotate this axis, yes, Rahul Rathod, is there any doubt? Let me know. And Jainvi Davangere students, good evening. Okay, Rathod, let me know in the chat. Is there any doubt? Okay. Now what you do is you rotate by an angle theta such that, okay, no problem, such that your new axis will be something over here, something like this. That is what? That will be your x dash axis and y dash axis. Now, as I told you, see, first your axis was something like this. Okay, कुछ ऐसा था. अब क्या करोगे आप उसको टिल्ट करोगे. अगर आप एक्सिस को टिल्ट करोगे तो ये वाला तो आपका x डैश एक्सिस होगा ना, और ये वाला आपका y डैश एक्सिस होगा, है कि नहीं? अब देखो, अब जो टेंशन आ रहा है वो तो x डैश एक्सिस में ही आएगा ना, और जो भी नॉर्मल फोर्स आ रहा है वो भी y डैश में फोर्स पे आएगा ना. yes or no? As you can see that. Now when you do that over here, so over here your tension comes over here itself, tension, and the normal force comes over here itself. Yes or no? Now what is the use of this? See, when you're trying to solve the problems over here, see, अगर मैं उस न्यू एक्सिस को लिखूं, ठीक है, ये वाला एक्सिस है, एक मिनट रुको, just a second. Students in the YT, let me know you are able to understand or not, and keep on participating. Okay, देखो, ये वाला है ना आपका, ये वाला न्यू एक्सिस है, that is what? x डैश, x नेगेटिव डैश, y डैश, y नेगेटिव है ये, और ये y डैश है कि नहीं? यस, वेरी गुड. अबे अदर्स लेट मी नो. पार्थ, समझ आ रहा है ना? जो हमने लास्ट क्लास में किया था वही कर रहा हूं मैं. हाँ, दिव्या, लेट मी नो. वेरी गुड. नाउ एज अ सेट, देखो ये जो हो रहा है ना, ये वाला आपका टेंशन ही आएगा. देखो मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैंने उसको जस्ट लिखा है क्योंकि टिल्ट कर चुका हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड के लिए मैं सीधा लिख रहा हूँ. लेकिन मोड़ नहीं सकता ना, हर बार मैं अपना सिर तो ऐसे घुमा नहीं सकता ना कि कह रहा हाँ ऐसे कर रहा हूँ, नहीं ना, उसको सीधा लिख दिया बस. ठीक है ना? इज इट गुड? अब ये मत पूछना ये क्या हो गया. देखो ये वाला टिल्टेड था, अभी मैं ये वाला एक्सिस लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा ही, मतलब उसको थीटा एंगल मैंने रोटेट कर चुका हूँ, लेकिन उसको सीधा लिख रहा हूँ सो दैट आई कैन लाइक सी इट क्लियरली, राइट इट क्लियरली. इज इट गुड? ओके हृदय, वेरी गुड. यस. अब देखो, अब जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो इधर ही आएगा ना, जो ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ये वाला टेंशन है. नाउ अब यहां देखो, जो ये वाला ये दिस वन ओवर हियर. नाउ दिस इज योर व्हाट? y डैश एंड x डैश एक्सिस. सर नो, ये वाला y डैश है, ये वाला x डैश है. ये वाला जो फोर्स यहाँ आ रहा था ना, क्या आ रहा था? ये तो mg था ना, दिस वाज mg ओवर हियर. नाउ कैन आई राइट दिस एज mg ओवर हियर? सर नो, ये जो वाला था. हाँ, वेट, वेरी गुड, वेरी नाइस. हाँ, अब mg को जो ये वाला एंगल आ रहा है ना, ये एंगल क्या होगा? अब देखो, mg होता था वो सीधा नीचे आ रहा था, है कि नहीं? इफ दिस इज कमिंग ओवर हियर स्ट्रेटली, नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है. जो ये वाला एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, है कि नहीं? इफ दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा. अब देखो ये जो एंगल है, ये आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है वो 90 है, लेकिन आपको पता है ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आएगा? जो सिर्फ ये है, ये थीटा आएगा ना, yes or no students? Let me know. So for that reason this angle comes out to be theta. Very nice. फिर से बताऊं क्या? Let me know students in the chat. फिर से बताऊं? देखो फिर से बता रहा हूं such that there is no confusion. एक मिनट रुको. देखो ये वाला जो आ रहा है ये नीचे आ रहा है सीधा, ठीक है, ये mg है, ये सीधा आ रहा था अभी, और एक और है जो इस साइड जा रहा है सीधा, ठीक है. अब आपको पता है ये वाला अगर थीटा है और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल है, ये छोटा एंगल है, ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा. देखो, और एक और पता है कि आपका ये जो टोटल एंगल है, ये एंगल, ये क्या है? ये 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा होगा ना. यस और नो? यस और नो स्टूडेंट्स?
हाँ, इसकी वजह से ये वाला एंगल थीटा हो गया। यस, अब देखो ये वाला थीटा हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है, जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट आ रहा है वो क्या होगा, लेट मी नो, लेट मी नो स्टूडेंट्स, वो mg होगा ना, वो mg होगा, उसका जो कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं, जो ये वाला है, ये वाला जो थीटा है उसकी वजह से जो कंपोनेंट आ रहा है वो mg cos थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट है वो mg sin थीटा होगा ना, yes or no? So whenever you occur or whenever you see certain types of problems, make sure that आप ये mg sin थीटा और mg cos थीटा डायरेक्ट लिख दो, बस काम खत्म। कि ये जो नॉर्मल फोर्स हो ना वो आपका न्यू एक्सिस पे डिपेंड होगा, दैट इज व्हाट x डैश एंड y डैश। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? पता चला अभी जो भी होगा? हाँ, इज इट गुड? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये वाला mg है, सॉरी माय बैड, ये वाला mg है, ठीक है, और ये वाला थीटा था, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा mg cos थीटा, है कि नहीं, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये होगा mg sin थीटा। यस, इज इट क्लियर? वेरी गुड, वेरी नाइस। Others, let me know. Bagalkote students, Ballari students, did you get to know how you will use this? Sweetie, very good. How will use this rotation of axis component? Yeah, Parth, let me know. Okay, Krishna, let me know in the chat. Okay, very good, very nice. If that is the case, students, then let us quickly go to what? See, I told you you need to write directly. ठीक है, ये वाला directly लिख दो बस, काम खत्म। ठीक है, if that is the case students, then you need to find the value of tension and the string and the normal reaction of this what system. This system I'm telling you is in equilibrium. As I said, अगर मैंने बोला भी नहीं है तो ये equilibrium में होगा। ठीक है, so I want you to find out what is n value, what is tension value। ठीक है, what is the tension value, और ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, now I'm giving you 3 minutes of time, students. I'm giving you 3 minutes of time. So please answer the question. Here is the timer. The timer has started. Okay, please answer the question. अगर कुछ डाउट है बता सकते हो आप। हाँ हाँ, यस यस यस, यू नीड टू फाइंड व्हाट द टेंशन एंड द सी, टेंशन इधर ही होगा ना, ये जो टेंशन आ रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स आएगा ना, एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये टेंशन और नॉर्मल फोर्स क्या है। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। सो फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड द टेंशन ऑन दिस बॉडी। ओके, ऑन दिस बॉडी आपको जो भी आएगा पता चलेगा आपको, बाकी नॉर्मल फोर्स आपको पता चलेगा, आराम से पता चलेगा। यस सर भाई, वेरी गुड वेरी गुड, जो भी आपने बोला है वो सही है, लेकिन अभी आप काम कर लो कि नॉर्मल और टेंशन का वैल्यू बता दो। टाइम इज रनिंग।
So let me know, students. Okay. So yeah, there were certain technical issues. ठीक है, उसको सॉर्ट ही कर रहा था. अब सही है, ठीक है. अब हम सही से करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है. बता सकते हो कि क्या हो रहा है? लेट मी नो, स्टूडेंट्स. टाइम चाहिए, बता दो. लेट मी नो व्हाट आर स्टूडेंट्स आल्सो. Let me know, students. You need more time. Divya, Abhay, Ballari, Bagalkot students. Let me know. Explain. Okay, wait. Okay, Abhay, I'll explain. Very nice. But आपने ट्राई किया पाथ. लेट मी नो. स्वीटी, कृष्णा, लेट मी नो. राहुल, लेट मी नो इन द चैट कि एक्सप्लेन करूं कि ना करूं, या टाइम दे दो आपको. ओके, वेरी गुड. ट्राइड बट नॉट गुड. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ओके, या ओके, आई एक्सप्लेन. ओके, अब देखो. अब ये आराम से देख लेना कि जो भी कर रहा हूं क्या होगा, ये आंसर क्या आएगा. ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या आने चाहिए. ओके, जस्ट अ सेकेंड. नाइस. नाउ व्हाट यू नीड टेंशन. सॉरी, something's happening. Just a second, students. Okay, you need what? Normal and tension. Okay, just a second, students. Some issues with the pen tab. I don't know what is the issue though. Yes, clear. Now it's clear. Very nice. Huh, too many technical issues. Yeah. So what you need tension, and you need what? Normal force. Okay. So now you know that. See over here, अगर ये जो बॉडी है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट करेगा. लेट मी नो. एटलीस्ट ये बता सकते हो ना. ये जो बॉडी है, 5 kg बॉडी है, इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा. अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो एक टेंशन एक्ट करेगा. यस और नो. लेट मी नो, स्टूडेंट्स. और आपको पता है कि ये अगर 5 kg बॉडी है तो इसके नीचे एक वेट एक्ट करेगा. यस और नो. वेट. ऑल्सो यू नो दैट सिंस वॉट द बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइन प्लेन. हाँ, there is a normal force acting by the surface, because we want what? Force on the body. We need force on the body. Yes or no? ये सब चाहिए. Now students, now if I am trying to do the what, the FBD, I told you need to do draw using what? Rotation of axis. ठीक है, rotation of axis. अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस यूज कर रहे हो तो कैसे होगा. लेट मी नो, स्टूडेंट्स. अगर रोटेशन ऑफ एक्सिस ट्राई कर रहे हो तो कैसे होगा. ये देखो, आपका जो एक्सिस था वो तो रोटेट हो चुका है. मैंने अभी एक्सिस रोटेट हो चुका, मैंने बोल दिया था कि क्या करना है आपको. आपको पता है कि आपका जो नॉर्मल है वो यहाँ एक्ट करेगा. यस, वेरी नाइस. अगर ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई है, ये वाई डैश होगा. ओके, ये नेगेटिव एक्स डैश है और ये एक्स डैश है. तो ये नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, है कि नहीं. और आपका टेंशन इधर ही एक्ट करेगा. एंड आई टोल्ड यू दैट देयर इज एन mg दैट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, mg. और ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? mg cos थीटा होगा. ये वाला थीटा ही होगा ना, एज आई एक्सप्लेन. और ये वाला mg sin थीटा होगा. ऐसे और नो. अब मैंने रोटेशन ऑफ एक्सिस अप्लाई किया है, इसकी वजह से मुझे ये सब आ गया. ऐसे और नो, स्टूडेंट्स. हाँ, वेरी नाइस. ये सब आ चुका है. अभी देखो, अभी वी नीड टू अप्लाई. सी, एज आई टोल्ड कि सिस्टम इज इन व्हाट? इक्विलिब्रियम. अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? लेट मी नो, स्टूडेंट्स. सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा कि जो एक्स एक्सिस का नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, जो वाई एक्सिस का फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा. आपको पता है कि ये सब सही है. अगर ऐसी बात है तो क्या, व्हाट कैन आई अप्लाई ओवर हियर? कैन आई अप्लाई टी माइनस mg sin theta equal to 0 using what? fx equal to 0. ये सही है. वेरी गुड. अगर ऐसा एक और बात है तो कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, n नॉर्मल फोर्स माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0. ये कैसे आएगा? ये आएगा कि fy इक्वल टू 0 है कि नहीं.
ऐसा और नो? अब एक और है, ठीक है, देखो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैन आई राइट समथिंग लाइक टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, है ना? और अभी ये बताओ m का वैल्यू कितना था? m का वैल्यू 5 था, 5 kg था, तो वेट का वैल्यू कितना आएगा? 50, है कि नहीं? वेट इज व्हाट? 50, यस और नो? तो 50 क्या है? न्यूटन है। नाउ कैन आई राइट दिस एज t इज इक्वल टू 50 साइन थीटा? ये आएगा आपका पहला वाला, है कि नहीं? सिमिलरली इफ आई राइट दिस n इक्वल टू mg cos थीटा, फिर क्या आएगा ये? n इज इक्वल टू 50 cos थीटा, ये वाला आएगा दूसरा। यस, वेरी गुड। अब ये देखो कि हमारे पास एक और है, एक और मास है ना, एक और मास का भी हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा ना, वरना कैसे होगा? ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? yes, very nice. हाँ, you know that if I'm standing over here, then इसका जो नॉर्मल, इसका जो टेंशन होगा ये ऊपर होगा, yes or no? And there will be a weight acting, weight is equal to mg, yes or no? That is what? That weight equal to how much? 30 न्यूटन पे होगा ना, अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूं। yes, very good. Now if I'm writing it, can I do something like this? See, over here there is this point mass m, ठीक है, यहाँ m है, उसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है और इसके नीचे जो लग रहा है वो वेट लग रहा है 30 न्यूटन, है कि नहीं? अब मैंने बोला ये वाला जो एक्सिस है वो y एक्सिस है, और ये वाला नेगेटिव y है, ये वाला पॉजिटिव x है, ये वाला नेगेटिव x है। अगर आपको ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम में होगा तो डायरेक्शन ऑफ fx फोर्सेस इज इक्वल टू fx फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एंड डायरेक्शन ऑफ fy इक्वल टू 0, ये भी पता है आप लोगों को। अगर ये सब पता है देन आपको ये आएगा ना, अगर डायरेक्शन ऑफ fy फोर्सेस आपको 0 करो तो ये आ जाएगा ना, दैट इज व्हाट? लेट मी नो। ओके भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम सही से समझो ना तो काम कर लो कि आप दी last class that where I explained about equilibrium, please look into it, okay? So you get what? You get t minus what? 30 is equal to 0. So value of t comes out to be 30 Newton. Hey ki nahi? Now you got this. Now we have certain equations now. What is that? T is equal to what? The first equation that we got was t is equal to 50 sin theta. T is equal to 50 sin theta. ये वाला पहला था। अगर ऐसा है तो आपको पता है t कितना है। So 30 is equal to 50 sin theta and we get sin theta to be, sin theta क्या आएगा? 30 by 50 and this comes out to be what? Students, let me know. ये क्या आएगा? Theta sin theta is equal to 3 by 5. है कि नहीं? Now, do you remember? Yes, very good. Do you remember the famous triangle for 3? Okay, for 3 kg body. Okay, no problem. See, I'm going to draw here. Okay, Balari students. Over here, we had an inclined plane. Okay, we had an inclined plane. We had an inclined plane and we had a body. And यहाँ एक mass attached था. ये वाला 3 kg है ना? This was 3 kg. Now you know that if I'm standing over here, Balari students, if I'm standing over here, there is a tension acting. Yes or no? Rahul, very good. Okay. So just a second. We'll talk about the triangle right now, but I'm explaining about the value that we got, t minus 30 is equal to 0 for the 3 kg body. Students, let me know from JNV Ballari, is the tension acting over here? Yes or no? This was 5 kg. And if I'm standing over, there's a tension T. Now let me know, Ballari students, the tension is acting over here, yes or no? Let me know. If I get your answer, then only I'll proceed, okay? Let me know, students, jaldi. And students in MIT, let me know your doubt too. Yes, Ballari, okay, very good. Similarly, since there is a weight of, let's say the mass is 3 kg, you know that there is a tension also. Sorry, will be a mass, a weight that is acting. My bad. There will be a weight acting. That is what? 3 gram.
Since I'm taking G to be what 10, okay, G to be 10, I'm writing it to in what SI unit, that comes out to be what 3 Newton. Yes or no? 30 Newton आ जाएगा, sorry, 30 Newton आ जाएगा. Now, if I'm considering this as a separate body, since it is a separate body, yes, you know that the sum of Fx forces and the sum of Fy forces will be 0. If I'm taking what this as my axis, this is x axis and this as my y axis. Okay. Now wait, over here, this is my x axis and this is my y axis. Okay. Now you know that there are only two forces that is acting. Weight is equal to 30 Newton for mass over here, and there is a tension acting. There is no x force. Yes or no? There is no x force. Like x direction allows force unta illa. Only y forces are acting. When you're writing y forces, you can write, see, this is what positive y and this is negative y. If that is the case, can I write t minus 30 equal to 0? If that is the case, I can get t is equal to 30 Newton. This is how I got it. Did you understand? Let me know. Yes, very good. Very nice. Okay. So I'm erasing this. Okay. I'm erasing this. Nice. Now, now, did you understand these things also? Let me know. Did you understand? You got 30. Then what did you do? What did you do? You have this first equation, t is equal to 50 sine theta. Then you apply t value over here. You get 30 is equal to 50 sine theta. And you get sine theta is equal to 30 by 50. And that is what? Sine theta is equal to 3 by 5. Yes or no? Now, you know that if sine theta is 3 by 5, and you have a famous triangle, that is what? Right angle triangle. That is what? This is 5. And this should be, if this is theta, this should be 3. Then this side comes out to be what? 4. Now, if that is the case, students, you know what is the value of theta? What is the value of theta? Do you remember? Do you remember the value of theta? That is what? 37 degrees, students. Very nice. Parth, very good. Very nice. If that is the case, then over here, t is equal to 50 sine what? 37 degree. Yes. You got theta also 3 by 5 sine theta. T is equal to 50 what? Into 3 by 5. That is 5 ones are 5 tens are. This comes out to be what? T is equal to how many? 30 Newton. And this was the value of tension. Yes or no? This is my answer. I got the tension value now. Abhi dekho. Similarly, if I want what? Normal force, you know that you got n is equal to mg cos theta. What that is what? N is equal to mg cos theta. And what is m? M value is what? We got 50 cos theta. Yes, just a second. We got how much? 50 cos theta. Now, you know that theta is 37 degree. N is equal to 50 cos 37 degree. Very good. N is equal to 50 cos 37 is 4 by 5 into what? Into 4 by 5. 5 ones are 5 tens are. N is equal to 40 Newton. Is it good? This is your answer number 2. Did you get it, students? YouTube students, let me know in the chat. Let me know, students. And others who are attending in Zoom, let me know. Yes, very good. So you got the answer, right? So the tension is equal to 30 Newton. And what? Normal equal to 40 Newton. Is it good? Yes, very nice. Okay, students, let me know. Bagalkot, Davangere, okay, Abhay, Divya. Nice. Very nice, very good. Okay. Now, if that is the case, students, then can I proceed? Now, see, we were talking about equilibrium of forces. Now, we also talked about what? Rotation of axis in order to solve the numericals.
there is one important thing when you're trying to solve numericals based on Newton's first law of motion. Okay, there are certain things that you need to understand. Don't worry, we'll be talking about this when we come to the chapter of rotations. Okay, rotations we'll also talk about in very detailed manner, but always remember one thing. Okay, the note ki agar if I'm saying a body is in equilibrium, okay, then there are certain scenarios where only translation motion or translation, what is translation motion? Okay, that is what zero net external force. See, as I said, what is translation motion? Basically, if I'm saying ki summation of fx is equal to 0, summation of fy equal to 0, and summation of fz equal to 0, then I said you that the system is in equilibrium. Now, if the system is in this scenario, then we call it as what? Translation motion. Okay, we'll be talking about it, but just remember. But there are certain scenarios, even after doing what? Even after applying this, this concept, it won't be in what? In equilibrium. In equilibrium. For that case, students, you need to apply what? Rotational equilibrium also. Okay, what? Rotational equilibrium also. Basically translation motion, or it is called translation equilibrium. Okay, it is called translation equilibrium. So what? You need to apply rotational equilibrium also. So what does it mean? Zero net external torque. Torque का मतलब क्या है? अब देखो, okay, let us try to do one thing. Okay, I have a rod. Okay, then I have kept at a certain, let's say ये एक उसको let's say in order to make it stand. Okay, in order to make it stand, there is this two rods over here. Okay, so standing apparels. Okay, now if I'm applying a force over here, now due to symmetry, ठीक है, जो फोर्स ये आएगा ना, ये वाला फोर्स F/2 आएगा, ये वाला भी फोर्स F/2 आएगा. ओके, ये दोनों फोर्स F/2 आएगा. अब आपको अगर देखो, आपको पता है कि ये जो y एक्सिस है, कैन आई से दैट दी x y डायरेक्शन फोर्सेस जो होता है वो है f, व्हाट? f इज इन नेगेटिव f प्लस F/2 होगा ना, ये वाला और ये वाला. इसका आंसर जीरो आएगा ना, है कि नहीं स्टूडेंट्स? देन कैन आई से दिस इज इन इक्विलिब्रियम? ये इक्विलिब्रियम में होगा ना. वेरी गुड, अदर्स लेट मी नो. हाँ, लेकिन स्टूडेंट्स, अगर मैंने ऐसे ही सेटअप को लिया, एक और सेटअप है, और जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, वो इधर कर रहा हूं. ओके, एज इन लेट्स से दिस वाज L. ओके, ये पूरा लेंथ L था, लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूं L/2 में. ठीक है, L/2 कर रहा हूं, लेकिन अभी जो भी अप्लाई कर रहा हूं वो डिस्टेंस A पे कर रहा हूं और B पे कर रहा हूं. ठीक है, बेसिकली अगर एक रॉड था, इफ देयर वाज अ रॉड, अगर मैंने यहां अप्लाई किया ना तो कुछ होता नहीं है. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अगर मैंने यहां अप्लाई किया तो एक रोटेट होगा ना. ऐसा नो स्टूडेंट्स? अगर मान लो यहां अप्लाई करो तो एक रोटेट होगा ना. यस, ऐसा नो स्टूडेंट्स? लेट मी नो. हाँ, तो उस रोटेशन की वजह से एक क्या होता है, वो टॉर्क आ जाता है. ठीक है, ड्यू टू दिस जो एक रोटेशन आ जाता है ना, उसकी वो रोटेशन को हम टॉर्क बोलते हैं. डोंट वरी, इन डिटेल, इन अ वेरी वेग मैनर आई एम टेलिंग यू. ठीक है, एक रोटेशन आ जाता है. ठीक है ना, अगर मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन अप्लाई किया, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ऑब्वियसली इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम. ऐसा और नो, तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम टू. इज इट गुड? Is it good? So the thing is, you can't always say that what the system would be in equilibrium if what? If fx is equal to 0, fy is equal to 0, or fz equal to 0. That means what? It is in translation equilibrium. कभी ऐसा होता नहीं है. ठीक है, there are certain scenarios we need to apply what? Rotational equilibrium to. ठीक है, ये सब दिमाग में रखो बस, और कुछ नहीं. Is it good? Yes. Let me know in the chat, or let's say with the thumbs up. Let me know, students. Very good, Parth. Very nice. Okay. Abhay, very good. Okay, nice. Now we'll be going to talk about what? Momentum. Okay, momentum.
व्हाट इज दिस मोमेंटम एक्चुअली? आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन ये मोमेंटम क्यों आएगा? सी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट मोमेंटम बिकॉज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानना है, then you need to understand momentum. ठीक है, you need to understand momentum. Harish, very good. Is there any doubt? Let me know in the chat. Okay, very nice. Okay, अब now we'll be talking about two scenarios. ठीक है, अभी ये देखो मेरे पास, let me say I have a glass. ठीक है, मेरे पास एक ग्लास था, ये वाला जो है ये ग्लास है। ठीक है, ये वाला ग्लास है। अब मैं दो केसेस लूंगा। ठीक है, आई गिव यू टू केसेस। एक केस है, एक केस है कि मेरे पास एक बड़ा बॉल है, उसका मास है 5 kg। ठीक है, और एक और बॉल है, उसका मास है लेट्स से, ओके कितना लूं, लेट्स से 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम्स है। नाउ अभी मैं एक कंपटीशन रखूंगा और मैं बोल दूंगा कि अगर कोई भी, इफ एनीवन will break this glass, if anyone break this glass, then I'll give them some money, let's say 5,000 rupees. तो आप कौन से मास यूज करोगे और किसको यूज करोगे, केस 1 को या केस 2 को? लेट मी नो इन द चैट, किसको यूज करोगे? लेट मी नो। वेरी नाइस। हाँ, ओके, अबे लेट मी नो। हाँ, yes, Ridhivari, let me know what do you mean by okay 5 kg. Yes, everyone. अबे okay, case 2, क्यों case 2? okay, everyone who is telling case 1 क्यों यूज करोगे? let me know students. देखो, अगर मान लो मैं 5 kg का यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि उसका वेट बहुत ज्यादा है, और आपको पता है कि क्या, अगर मैं 5 kg का बॉल यूज करूंगा तो व्हाट, श्योरली व्हाट, आई कैन ब्रेक द ग्लास, आई कैन ब्रेक द ग्लास। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इस ब्रेक, हाँ पार्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर मैं यूज कर रहा हूं तो आपको पता है कि श्योरली ब्रेक होगा, लेकिन अगर मान लो 5 ग्राम का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? आपको पता है कि ये सब, वो ग्लास ब्रेक नहीं होगा। तो अगर ब्रेक करने के लिए तो आप क्या यूज कर रहे हो? बेसिकली एक फोर्स तो यूज कर रहे हो ना। टू ब्रेक यू अप्लाई वन सम फोर्स, ऐसा नो। नाउ कैन आई से दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास जो भी आप यूज कर रहे हो, है कि नहीं? जो फोर्स कर रहे हो, कि फोर्स से कर रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो, तो कैन आई टेल दैट दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस मास, है कि नहीं? वेरी गुड पार्थ, लेट मी नो। यस, गणेश, गुड इवनिंग। ओके, हाँ, नाउ यू नो दैट कि एक फोर्स यूज करेगा, हाँ, देयर इज सर्टेन फोर्स। नाउ आई विल गिव अ सेकंड सिनेरियोस, अगर थोड़ा चेंज करो, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ये जो 5 kg का ये है, वो एक मेटल बॉल है, ठीक है, वो एक मेटल बॉल है, और जो ये 5 kg का बॉल है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लेट्स से इन 500 मीटर पर सेकेंड। तो आपको, आप ये बताओ कि वो ग्लास ब्रेक कर पाएगा? कैन इट ब्रेक? कैन इट ब्रेक द ग्लास? कैन इट ब्रेक द ग्लास? अगर ऐसा एक सिनेरियो दूं तो, एक मेटल, वो जो 5 ग्राम का बॉल है, ठीक है, जो भी दी मटेरियल है वो एक 5 ग्राम है, लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है 500 मीटर पर सेकंड, 5,500 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, विद द वेलोसिटी। सो विल इट ब्रेक द ग्लास? वेरी नाइस, हाँ, इट विल ब्रेक द ग्लास। सो अभी ऐसा बोल सकते हो कि जो ये फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, वेलोसिटी पे, है कि नहीं? लेट मी नो स्टूडेंट्स। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस स्वीटी, वेरी गुड। अब देखो, अभी हमको पता चला कि जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है, इट इज डिपेंडिंग ऑन मास, एंड एक फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, नाउ साइंटिस्ट ने एक थिंग कर दिया, ठीक है, एवरीवन थॉट, लाइक दे हैड दिस थॉट प्रोसेस की, if the force that is acting depends on the mass and velocity, then we want something that what, that relates or combines, that combines what, mass
एंड वेलोसिटी, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी को कंबाइन जो करेगा ना, उसको क्या, उसको लाने के लिए, फॉर दैट रीजन दैट गिव बर्थ टू व्हाट, द मोमेंटम, एंड वी डिनोट इट बाय व्हाट, पी, डिनोट इट बाय व्हाट, पी। अब पता चला कि मोमेंटम किस आ गया, एक फील आ गया। लेट मी नो स्टूडेंट्स, Bagalkot students, let me know in the chat. Can you do a thumbs up? Rahul, very good. Divya, let me know. Parth, let me know. फील आ गया सर, ओके गुड। हाँ, अब देखो, लेकिन ये फील क्यों मैंने दिया, ठीक है। अब आपको पता चला कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट्स से फोर्स, एंड इस फोर्स में एक मास भी है, एक वेलोसिटी भी है, आ रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है, एंड यू वांटेड व्हाट, समथिंग दैट विल कंबाइन मास एंड वेलोसिटी। ओके, now I'll tell you. Okay, now similarly let's take another scenario, अगर वो भी समझ नहीं आया, let's take another scenario, ठीक है। जो एक बॉल है, ठीक है, वो एक बॉल है, it is what, let's say it is 1 gram mass, ठीक है। now ये जो बॉल है, it is traveling at a what, let's say कि ये एक ट्रैवल, इस बॉल इज ट्रैवलिंग एट a velocity v, ठीक है ना। now if I ask you कि whether you can stop this ball or not, let me tell you, or let's say this object, ये जो object है, if it's traveling with the velocity towards you towards you towards you, can you stop it or not, stop it or not, let me know. ha wait, ha, very nice, very good, but I'm telling it is traveling with the velocity. अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हाँ इजिली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना, है कि नहीं। अभी मैंने ऐसा बोल दिया कि ये जो ये है जो ट्रैवल कर रहा है, वो एक्चुअली ट्रैवल कर रहा है v इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड। बेसिकली क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये बुलेट है, ये वाला बुलेट नहीं, ठीक है, वो बाइक वाला नहीं है, जो गन से आता है ना, गन की होता है ना बुलेट, वो वाला है। ये बताओ कि अब क्या बोलोगे कि विल यू स्टॉप इट और नॉट, लेट मी नो स्टूडेंट्स, let me know. Then it is not possible, never. Very nice. Now see, when I give you information, about what, about the mass and the velocity, then you said what, then you said that obviously I can't stop it, yes or no. Similarly, now let us say if this is the object, okay, this is the object and it is traveling with the velocity v is equal to 0.1 meter per second, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर मैंने पूछ लिया कि कैन यू स्टॉप इट और नॉट, व्हाट विल बी योर आंसर बी? यस, वेरी नाइस, हाँ, ओके, वेरी गुड। अगर अब देखो, अब आपने बोल दिया हाँ सर वी कैन स्टॉप इट, लेकिन अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक let's say what can I do, very एक large rock है, very big large rock है, ठीक है, it's a very massive rock, will you be able to stop it, will you be able to stop it, let me know. No, okay, very good, everyone who is answering in YouTube live, very nice, ठीक है, yes, okay, velocity, very nice, everyone who has answered it, maybe no, okay, okay, it's very big, let's say it's very massive, आप stop कर सकते हो नहीं ना. So what, again over here I'm giving you information about mass and velocity, yes or no, both information is required to understand what कि आपको जो whatever the quantity or whatever the object is, whether what you can stop it or not. Now when you're talking about momentum, students, when you're talking about momentum, basically what is saying is momentum is defined as quantity of motion contained in a body, है कि नहीं। जब मैंने बोल दिया कि आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट है वो बुलेट है और एक ऑब्जेक्ट है क्या, हैवी लार्ज रॉक, आपको पता चला कि आपको उसको you can stop it or not, you can stop it or not, yes or no. So momentum defines the quantity of motion, उस जो मोशन, उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है
वो एक उसके क्वांटिटी के बारे में बता रहा है बेसिकली, है कि नहीं? मास एंड वेलोसिटी से आपको क्वांटिटी पता चलेगा कि हाँ, कैन आई स्टॉप इट और नॉट। अब पता चला कि मोमेंटम क्या है बेसिकली। मोमेंटम बेसिकली टेल्स अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। तो बेसिकली एक क्वांटिटी बता रहा है। देखो, जब आपको मास पता था आपको, यू टोल्ड दैट कि हाँ आई कैन स्टॉप इट। लेकिन यस, वेरी गुड। लेकिन जब मैंने उसको वेलोसिटी इंट्रोड्यूस किया, उसका वेलोसिटी इंट्रोड्यूस किया, तब आपको पता चला कि हाँ आई कैन स्टॉप इट। सिमिलरली जब मैंने बोला कि वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड है, आपने बोला हाँ आई कैन स्टॉप इट। लेकिन जब मुझे उसकी मास पता चला, तब आपने क्या किया, हाँ इसकी मास तो बहुत, ये तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, आई कैन स्टॉप इट। सो वो क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है बेसिकली, है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में है अभी? now now when you're talking about what yes, very good. When you're talking about the momentum is a product of mass of the body and its velocity, ठीक है? आप ये बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, जो मोमेंटम है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। देखो, अगर ये जो बॉडी है, मास m है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो आपका जो मोमेंटम आएगा m इंटू वी, वो भी इसी डायरेक्शन पे होगा ना? ऐसा नो, बिकॉज अ वेलोसिटी विद अ वेलोसिटी v वो ट्रैवल कर रहा है। तो आपको वो भी पता चलेगी कि हाँ, इसका जो डायरेक्शन है इट इज सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। ऐसा नो? वेरी नाइस। अदर्स लेट मी नो। रेड्डी वरी, ज्ञान वेंकट साई, ओके, ज्ञान वेंकट साई, गणेश लेट मी नो, ओके, हरीश, very nice. Now, and the third point is momentum is a vector quantity. See, अब ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गया? आपको पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी में क्या आएगा, एक डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट भी है, और क्या, और मैग्नीट्यूड भी है। यस, वेरी नाइस, ओके। तो इफ दैट इज अ केस, सी मास यू नो इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा नो, मास में डायरेक्शन है नहीं ना? तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम आल्सो विल हैव व्हाट, मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी नाइस, वेरी गुड। अदर्स लेट मी नो, अदर्स, अमित लेट मी नो। अबे, पार्थ, कृष्णा, स्वीटी, या तक समझ में आया? अर्थ आಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ಯಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜೆಎನ್ವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ? ಬಾಗಲಕೋಟಿಂದ ನಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ somehow? Let's say thumbs up, or let's say any response, text message. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. Okay, now what, another thing about momentum is denoted by what? Denoted by the symbol p. And also I said that Ballari, very nice. Ballari students, okay. And also what I told, that the momentum is the product of mass into velocity, and it is a vector quantity. And in vector form, when you're writing it, it is p is equal to m into v. Since v is a vector and p is a vector, obviously because of the velocity that is in. Okay, is it good? Let me know. And now talking about the SI unit of momentum, see, it's given at kg meter per second. ये कैसा है? इधर एक बनतु, p is equal to m into v. Now m is what? Mass. v is what? Velocity. Now you know that mass. Let me know in which unit we consider mass. What is the unit of mass? Very good, kg. What is the velocity? I mean, what is the unit of velocity? Velocity की unit क्या है? Very good, mass into meter per second. So p is equal to what? Kg meter per second. This will be the unit. Very nice. Now students, now
let us try to manipulate this unit. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ manipulate ಮಾಡುವ. We have kg meter per second. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು into second by second ಮಾಡಿದ್ರೆ it turns out to be something. Let me know, can you guess something? Something is happening over here. Can I do something like this? kg meter second by second square. ಹೀಗಾಯ್ತಾ? ಈಗ let me know, students, do you remember something? kg meter per second square, what is this? Do you remember? kg meter per second square. No, kg आ रहा है. Abhay, very good. Sweetie, there is kg, so acceleration obviously won't come, right? Rahul, no, I want that word. What? Let me say which SI unit, which SI unit it represent. Yes, which SI unit it represent? Harish, let me know. Can anyone tell me? Rahul, no. Janvi Ballari students. Can I tell it to be Newton? No. Okay. What is it called? Newton, right? kg meter per second square is what? Newton, right? Yes or no? So, it is force only. It is force. But kg meter per second square is what? Newton, yes or no? Yes. So what is it? This basically represent what? Newton. Yes. Now there is this another unit that comes into picture. That is what? The another unit of momentum. P is what? Newton second. Okay. This is another unit. So please remember this. Okay. Please remember this unit. Okay. Please remember this unit. Is it good, students? Let me know. Okay. Very good. Others, let me know. Jaldi. Yes. Very good. Students in YouTube, let me know. Force. Yes. Okay. Good. Now, students, if that is the case, now you understood what is this momentum, what is the SI unit of momentum, what it represents. It represents what quantity of motion. Now in the next class, what we'll be doing is we'll be talking about Newton's second law of motion. See, everything that we have talked till now, tension, force, normal force, okay, FBD diagram, momentum, everything leads to what? The second law of motion. Okay, from here we'll talk about the law of motion. Okay, this law, what does this law say? Then we'll talk about pulley problem. In pulley problem, we want what? We know that there is tension. Yes or no? We need FBD. All the things that we are talked, are connected, students, are connected. For that reason, I have talked about all these things in order to what? Sum up, in order to understand Newton's second law of motion. Sir? Yes, sir. को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay. क्या बोलूं मैं? It depends on the slang of the regions of Karnataka. Okay, Karnataka students, let me know. Yes, sir. ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾವು ಎಸ್ ಸರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹೌದು ಸರ, ಹೌದು ಆರ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಸ್ ಗೆ? Karnataka, Rahul, let me know. Ballari students. So students from other states want to know how to say yes sir in Kannada. So yeah, Parth, you can say howdu sir. Okay, you can say howdu sir in Kannada. Okay. Okay, Abhay, is it good? Okay, nice. Okay. Okay, Parth, good. Okay, so that's all for students. So what did we talked about today? The first thing we talked about what? Momentum. How this, sir? Okay, we talked about momentum, yes or no? Where we got to know that what? We got to know that momentum basically tells about the quantity of the motion. Yes, and we talked a lot of things. We also talked about rotation of axis. Okay, so in the meantime, I'm launching the NPS poll. Please answer the NPS poll, students. Okay, yes. Yes, Nana Venkadasai, yes, I'm an IITian. I'm from IIT Indore. I have done my master's from IIT Indore. Okay,
So please answer the NPS, okay? So yeah, so also we talked about rotation of axis, in order to what? Solve problems. Very good. Okay, Dhanyawada, good night. That's all for today, students. Thank you for attending. Okay, if you have any doubt, let me know in the chat. I'll be waiting for 2 minutes. Okay, students, take care then. Bye bye. See ya. Okay, bye bye, YouTube students.